So in this video, let's solve one of the most important questions of cost accounting from marginal costing. Right, this is your illustration number 6, and this question is very important for your examination point of view. This question carries up to 6 marks, and this question is very important for offline examinations, especially for offline examinations. Right, इसके पहले हमने सॉल्व कर दिया था illustration number 4 and illustration number 5. Now in this video, let's solve illustration number 6. Right, so let's get started without wasting any further time. Right, so questions is SB Limited, a multi-product company, furnishes you the following data relating to the year 2015. Right, here sales or cost given: sales for first half of the year 45,000 and second half of the year 50,000. Likewise, cost for the first half of the year 40,000 and in second half of the year 43,000. Assuming that there is no change in price and variable cost, and that the fixed expenses are incurred equally in the 2 half-year period, then we need to calculate for the year 2015 the profit volume ratio, break-even sales, fixed expenses, and percentage of margin of safety. Right, so this is the questions, and very simple and very easy. You just need to remember the trick. And need to understand the questions very well. Right, so let's solve these questions without wasting any further time. Right, so as you know that profit volume ratio formula is change in profit divided by change in sales into 100. Change in profit divided by change in sales into 100. So here you can see that sales given, cost given, so profit not given. First we need to calculate profit. Right, so here see, cost sales कितना था फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में 45,000, कॉस्ट कितना था 40,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, सो प्रॉफिट हो गया आपका 5,000. सिमिलरली फॉर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर सेल्स था 50,000, कॉस्ट था 43,000, तो सेल से अगर कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो गया 7,000. सो इन दिस वे चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में 5,000 प्रॉफिट आया और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में प्रॉफिट आया 7,000. राइट, सो चेंज कितना हुआ 2,000. सो सिमिलरली प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फॉर्मूला इज चेंज इन प्रॉफिट. ये हो गया आपका चेंज इन प्रॉफिट. राइट, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स. सो चेंज इन सेल्स इजीली वी कैन कैलकुलेट. चेंज इन सेल्स सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में था 50,000, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में था 45,000, मतलब 5,000 चेंज हुआ है, 5,000 सेल्स इंक्रीज हुआ है. तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स. सो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में था 50,000, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में था 45,000, तो चेंज हुआ 5,000. राइट, सो चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल्स इंटू 100. राइट, सो इन दिस वे ये हो जाएगा आपका 2,000 divided by 5,000 into 100. 2,000 divided by 5,000 into 100. So ये आ गया आपका 40% profit volume ratio. 40% profit volume ratio. Now we have to calculate fixed expenses, right? So
as we know that the formula of fixed expenses is sales into profit volume ratio minus profit, sales into PV ratio minus profit, right? So or you can say that as you know that contributions minus fixed cost is equal to variable cost, right? Similarly you can say sales into PV ratio minus profit is equal to fixed expenses. सो वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है ना, कंट्रीब्यूशन से अगर फिक्स कॉस्ट को हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। सिमिलरली फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन किया जाता है ना, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, मतलब पीवी रेशियो से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है सेल्स को, उसके बाद माइनस करना है प्रॉफिट, राइट? सो हियर सेल्स कितना था, फिक्स एक्सपेंसेस फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, रिमेंबर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। सो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर का सेल्स था 45,000, सो हियर 45,000 एंड पीवी रेशियो कितना था 40%, 40% मतलब 0.4, तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आया था फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में 45,000, सेल्स था, कॉस्ट था 40,000, सो प्रॉफिट आया 5,000, सो सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, सो ये आ गया आपका 45,000 इंटू 0.4 18,000 माइनस प्रॉफिट कितना था आपका 5,000, सो 5,000 माइनस करने से आता है 13,000 फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सो यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। द फिक्स्ड एक्सपेंसेस फॉर्मूला इज सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, राइट? नाउ फिक्स्ड एक्सपेंसेस फॉर द होल ईयर कितना होगा, अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर के लिए अगर 13,000 हो रहा है तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर मतलब फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ मिलाकर फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए ना, अगर फर्स्ट हाफ का 13,000 हो रहा है तो सेकेंड हाफ का ऑल्सो वही सेम टू सेम 13,000 होगा, राइट? सो फिक्स्ड एक्सपेंसेस इज 26,000। सो फॉर द ईयर का हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस आ गया 26,000। Now we have to calculate break-even sales. Break-even sales. So as you know that the break-even sales formula is fixed cost divided by profit volume ratio. Fixed cost divided by profit volume ratio. So we have already obtained fixed expenses, that is 26,000 divided by profit volume ratio हमारा कितना आया था 40%, 40%, right? So break even sales is equal to 26,000 divided by 40% is equal to 65,000. 26,000 divided by 40% is equal to 65,000, right? So now we have to calculate percentage of margin of safety. Percentage of margin of safety. For that first we need to calculate the value of margin of safety, then we can easily calculate margin of safety ratio, right? Percentage means ratio, right? So as we know that the formula of margin of safety is total sales minus break even sales is equal to margin of safety. total sales कितना था, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में था 45,000 एंड सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में था 50,000, सो ये हो गया आपका 95,000। ब्रेक इवन सेल्स कितना था 65,000, सो 95,000 माइनस 65,000 इज इक्वल टू 30,000। 30,000 आ गया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नाउ हाउ टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100 डिवाइडेड बाई सेल्स, टोटल सेल्स। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 30,000 इंटू 100 divided by 95,000 is equal to 31.58%. Very simple and very easy. You just need to remember all the formula for profit volume ratios, fixed expenses, break even sales and margin of safety. ओके अगर फार्मूला अच्छे से याद आता है, अगर फार्मूला अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस कर दिए तो ये क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें स्कोरिंग 6 मार्क
इजीली आ सकता है विद इन लेस पीरियड ऑफ टाइम, राइट. सो यू नीड टू प्रैक्टिस all the questions of marginal costing so that you can easily solve in exams, right. So this is it all about illustration number 6. In the next video we will discuss about illustration number 7. So this is it all about illustration number 6. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support, and happy studying.